Hello friends, my name is Neelkanta Mohite. As we seen in last lecture, we have taken two problems on uniform acceleration motion. Now we will continue with the next problem on uniform acceleration motion. Trees A, B and C are planted alongside a straight road at 50-meter interval. A car traveling with uniform retardation passes tree A, takes 7 seconds to reach B and takes further 8 seconds to reach C. Calculate the velocities of the car A, B and C. Schematic diagram is given as follow. Also find the distance the car will travel from C before coming to rest. In this equation, A, B, C are the planted trees along the straight road. मतलब रोड के बाजू में ये 3 ट्रीज है जो एक दूसरे से 50 मीटर डिस्टेंस पे है. मतलब A, B, C आर द ट्रीज विथ इंटरवल 50 मीटर एंड 50 मीटर. ये एक दूसरे से 50 मीटर दूर है. ये रोड के साइड में ये ट्री है और उसको एक कार वहाँ से गुजर रही है, पास हो रही है. ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब वो अपना वेलोसिटी कम करते जा रही है. वो डी एक्सेलरेट और रिटार्डेशन से पास हो रही है, वो मोशन में है. उसको पॉइंट और ट्री ए टू ट्री बी जाने के लिए 7 सेकेंड लगे. उसके बाद ट्री बी से ट्री सी तक जाने के लिए उसको 8 सेकेंड लगा. ये प्रॉब्लम में गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी व्हेन कार एट ए, व्हेन कार एट बी, व्हेन कार एट सी. ये 3 वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और साथ में द डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल फ्रॉम सी बिफोर कमिंग टू रेस्ट. मतलब ये कार डी एक्सेलरेट होते जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं जाके उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, मतलब वो रुकने वाली है. तो हमें व्हेन कार पासेस फ्रॉम सी, somewhere car will stop or somewhere car gets velocity 0. We have to find distance that point. We consider that point is D, where car gets velocity 0 or car get rest. We have to find that distance. Now step by step we will write the given. पहले हम कंसिडर करेंगे लेट वी ए, वी बी एंड वी सी बी द वेलोसिटीज ऑफ द कार ए बी सी. मतलब यहाँ की वेलोसिटी वी ए मानते हैं, यहाँ की वेलोसिटी वी बी मानते हैं और यहाँ की वेलोसिटी वी सी मानते हैं. यस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम सी बिफोर कमिंग टू रेस्ट. मतलब डी ये पॉइंट है, यहाँ पर जाके कार रुकेगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और C टू D ये डिस्टेंस यस कंसिडर करते हैं जो कि हमें निकालना है. नोट दैट कार इज हैविंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए थ्रू आउट इट ट्रैवल फ्रॉम A टू D. हमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम में गिवन दिया है कि कार A टू D मतलब जहाँ से कार चल रही है और जहाँ पर जाके रुकेगी वो कंटिन्यू यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है. उसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम कम होते जा रही है यूनिफॉर्मली. कंसिडर मोशन ऑफ कार फ्रॉम ए टू बी. हम स्टेप बाय स्टेप गिवन लिख के यहाँ की अननोन टर्म निकालने की कोशिश करेंगे. वी कैन फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द
question on uniform acceleration velocity by the Newton's equation motion. Let's what is given. Initial velocity u is considered as va at point A. Final velocity v is equal to vb. We have considered what is given. Time is given 7 seconds and distance is given 50 meter. From that, displacement given 50 meter, time is given 7 seconds. We will use Newton's second equation of motion. S is equal to ut plus half a t square. We know the value of displacement 50 meter. We know the initial velocity, means we have considered and we have to calculate. Time is given 7 plus half. Acceleration also we have to find, and t is given 7 square. Now consider this is equation 1, because in that term, in that equation, two unknowns are there. One initial velocity and second is acceleration. We will consider that is equation 1. Now second, considering motion from car from A to C. Now consider car A to C. This motion we will take in consider and try to find unknown values. We know the distance between A to C, that is 50 plus 50, 100 meter. We know the initial velocity VA, we know the final velocity VC, and we know the time interval is 7 plus 8 is 15 seconds. Note down that given initial velocity VA, displacement is 50 plus 50, 100, time is 7 plus 8, 15 seconds. Again we are going to use second equation of Newton's motion. S is equal to ut plus half at square. We know the displacement 100. We know the initial velocity VA, we have considered. Time is, we have calculated total time required 15 seconds plus half. We have to calculate acceleration A. Time is 15 seconds, 15 square. Now consider that is equation second. From the equation 1 and equation 2, we can find the value of acceleration. To calculate equation 1 and 2, we have to first equation 1 into multiply by 15 and equation 2 multiply by 7. To get that value same and get reduced, we have to multiply by that value. By solving this equation or comparing equation first and second, we get the value of acceleration is minus 0.12 meter per second square. Now car is moving with constant retardation 0.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया. नाउ दिस वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, then we can find easily velocity at point A. Now taking the equation first and put the value of acceleration here, we get the value of VA. VA is a velocity at point A or at tree A is 7.56 meter per second. Next, now consider motion of car from A to B and using Newton's first equation of motion, V is equal to U plus AT. From that equation we will put the known values and find the unknown value. We have initial value at A. We know the acceleration we have calculated.
and we know the time in between the motion of A to B. That is 7 seconds. Now put the given values. We find the VB, means velocity at point B, is 6.72 meter per second. Velocity of car at B, VB is equal to 6.72 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. हमने दो सॉल्यूशन निकाले. अब थर्ड, to calculate the third solution we have to consider motion of car from B to C, and using equation 1 of Newton's motion, V is equal to U plus AT. Now we have the initial velocity at point B, that is 6.72 we have calculated here, and we know the acceleration, and we know the time to travel in from tree B to from tree C, which is given in example. We got the velocity at point C is 5.76 meter per second. Now we have to calculate displacement from point C to from point D, where car is going to get velocity 0. Now we have the final velocity, we have the initial velocity at point C, we have the acceleration. From that third equation we can calculate or find the displacement. Put the given value. Final velocity is 0, initial velocity is 5.76 square, माइनस ये माइनस क्यों आया है, तो we know the acceleration value, that is minus 0.12. That's why this is minus 2 into 0.12 into displacement. From solving this equation we get the value of displacement, that is 138.24 meter. The distance that the car travels before coming to rest from C is 138.24 मीटर. मीन्स कार को ट्री सी से लेकर वेलोसिटी उसकी 0 होने तक उसको 138.24 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. वी फाइंड दैट सॉल्यूशन. हियर इज complete the problem. Next lecture we will see another problem on uniform acceleration motion. Thank you.